Hello and welcome to the highlights of day 4, the final day of this round 5 and the match between KP and Northern. Overnight scores quick fire, 55 for no wicket in just 9 overs from the two openers have set the tone. If they can continue to bat like this in the first session, then there is trouble for Northern. Look at that partnership of just 54 deliveries, so they almost run a ball. Bowlers were surprisingly shocked with the way in the last 20 minutes the batting side approached this final innings. They were hit all over. Just in those 9 overs, getting 55 has put alarming bells. Match summary tells us that's all to play for on the final day for KP and Northern. 335 is what they need from here to win this, and they have 3 sessions to do that. Let's see how day 4 begins. The umpires, Gauhar Kazmi in the television umpiring position. All set. So 335 is what KP needs from here. These are the most runs for Khyber Pakhtunkhwa before today. Khalid Usman has been there at the top of the table. First run of the day. Yes, he's gonna complete it. Nice shot. A bit of weight, and that's been put away. First boundary of day 4. And ended the over as well, 62 for none. Patience, boys. Lovely shot by Asrarullah. They came back downstairs from a high backlift, and off the bat it went very quickly. So first 4 runs of the day. The KP has been a touch careless in terms of shot selection at times. That will go for 4. Did he get some bat onto it? It was a bad line, so the bowler has to pay for it. 14 gone, 72 for none. Useful runs obviously for Khyber Pakhtunkhwa. Umar Masood tried his level best, but it was far too wide for him. निकाल दिया इसे बैकवर्ड पॉइंट के बराबर से 4 रन्स के लिए. इस बार पेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. आखिरी मौके पर अपने बल्ले का फेस ओपन किया इसरार ने. थोड़ी सी विड्थ दी इसरार को और उसका फ़ायदा उठाया. डाइव करके रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. जो कहते हैं कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस. अच्छा पंच किया गैप में. यहाँ पर 3 रन्स मिलने चाहिए, लेकिन रनिंग जो है उस पर सवार रहा है. इस बार 3 रन ज़रूर बनाए, लेकिन पहले 2 रन इतनी तेज़ी के साथ लिए नहीं थे. 41 रन बनाए हैं इसरारुल्लाह ने. मुसद्दिक उनके नए ओपनिंग पार्टनर हैं. उड़ता हुआ शॉट खेला. गेंद हालांकि पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन पार कर गई. मुसद्दिक ने चौका लगाया. उनका ये चौथा चौका था. 1 छक्का लगा चुके हैं. एच किया और विकेट कीपर ने डाइव की तकरीबन स्लिप के सामने, और वो कलेक्ट नहीं कर सके. 4 रन्स. डाइव करना, स्लिप के फील्डर को दाएं तरफ डाइव करना पड़ती, शायद वो आसान हो जाता. No, that's the KP's way of playing, or say Musaddiq's. Could have left that alone, anyone would. But they want to put bat onto it, and why not? So it's all about backing yourself. If you know that you have an opportunity to score runs, you'll go with it. There's a deep backward point available. Quite positive batting from KP now. Another couple of runs, and this will be Musaddiq's 50. Second 50 in the competition. Raises his bat to the pavilion. They are creeping back into this game and making Northern quite nervous now. You can see Fakhar Zaman on your screens.
couple of runs there, and that's Israrullah's 50 now. Both openers reaching their 50s. This is his second 50 of the competition, and it has come at the right time. 112 for none. KP really now challenging Northern with their tactics, with their good batting, running between the wickets. And there you go. Time and again, Musaddiq and Israr do that. They just surprise the bowler, and the fielders just have to go and fetch the ball. Hamad got a touch predictable on that occasion, so just went charging it. Hamad doesn't have the pace, so Musaddiq using his feet against him. Nicely driven. Should be more runs here. Long chase. The ball might just die on its own. We saw Israr on strike when Hamad was bowling. He gave him a peach of a delivery. एक अच्छी बात यह है कि क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। और एक और फ्लैट गेंद थी और जोरदार हिट लगाई। मुसद्दिक का शानदार छक्का, और खतरा बनते जा रहे हैं। जारहाना बैटिंग का मुजाहरा, 5 चौके लगाए और अभी तीसरा छक्का लगाया। मुसद्दिक ने यह खतरा उठाया और पूरा रिवॉर्ड मिला है। गेंद को उन्होंने एक मरतबा फिर स्टैंड के अंदर उठाकर फेंक दिया है। मुसद्दिक एक और छक्का लगाना चाहते थे, वो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। खासा बड़ा गैप है, तो ये दावत है मुसद्दिक के लिए कि वो अगेंस्ट द टर्न जाएं, लेकिन गेंद को क्योंकि टर्न नहीं कर पा रहे, एंगल का फ़ायदा उठा लिया मुसद्दिक ने। जल्दी करनी पड़ी, पहुंच गया अपनी क्रीज पर। फैजान थे पॉइंट पे। 150 रन मुकम्मल हुए। रिकॉर्ड पार्टनरशिप है इस साल की, न सिर्फ केपी के लिए बल्कि किसी भी टीम के लिए। और बिहाइंड की अपील की और विकेट मिल गई। इसरारुल्लाह डाउन द लेग साइड आउट हो गए। इससे पहले खुशनसीबी साथ दे रही थी, इस वक्त खराब गेंद पर वो अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। गेंद जो कि एंगल के साथ बैट्समैन को छोड़ती हुई जा रही थी, उसको निकालना चाहते थे फाइन खेलकर बाउंड्री की जानिब, लेकिन बड़ा शानदार काम किया स्टंप्स के पीछे मौजूद नौजवान उमैर ने, और वक्त से पहले एंटिसिपेट करते हुए वो भी मूव कर रहे थे इस गेंद के साथ साथ। बिलाखिर पहली कामयाबी हासिल की आज के दिन की। नॉर्थ ने इसरारुल्लाह 64 रन की एक अच्छी कंट्रीब्यूशन के बाद आउट हुए हैं। पहला नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को 155 पे 1। कामरान गुलाम को मैदान में आना पड़ा, जो इन दिनों बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में खुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफेंड किया इसे सीधे बल्ले के साथ कामरान गुलाम ने, और इस तरह ये पहले सेशन का खेल मुकम्मल हो गया नेशनल स्टेडियम में, जहां पर 157 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर केपी ने। So lunch on the final day, day 4, and KP fighting it. Lost that 1 wicket of Israrullah, 64, but Musaddiq still going on, 81. This looks like a game in the making where we will have a winner. Seems that way with that partnership of 155. The opening stand between Israr and Musaddiq has helped KP believe that they can get the remaining runs in the remaining 2 sessions. The bowling has been tested, yes, just that 1 wicket for Mohammad Nawaz. Otherwise, everyone has been going for runs, and that's been the highlight of KP's response in the 4th innings. The match tells you it's been a high-scoring game, 460 for 9 declared by Northern. Khyber Pakhtunkhwa fighting it out, 318. Northern quickfire 247, and KP have just matched up in terms of run rate. 157 for 1 at lunch on the final day. 2 sessions to go. Let's see what happens between lunch and tea. Noman Ali to continue and start it after the lunch break from the commentary box end. Straight away runs here, 4 of them. So 4 is what KP start off with the first ball after lunch. Slightly fuller, nicely worked away with some wrists and full flow of the bat.
Wow, now a pedal sweep. This is once again going towards the boundary line. More runs for Khyber Pakhtunkhwa. Is it going all the way? Yes. Back-to-back boundaries after the lunch break. We'll have to wait for the umpire signal. These runs are coming in form of extras, but who cares? If this is the intention, the runs are coming. Oh, that's gone through. And that should be out. He's taken a bit of a glove on the way. So that's the wicket. It was just saying got to be a touch careful when you're trying to block that or sweep something. And eventually the catch has been taken. I think it is Nawaz in the first slip, is it? No, it's not. But the catch is done and done cleanly. Have a look at this. The other side will actually show you how the ball has just ballooned. That's Faizan. Musaddiq, good knock, 85. I tell you, he has set the tone. Now the batsmen to come will have to just follow. One boundary towards QeA region, then 4 extra runs, and then a wicket. Adil Amin now joins in. This time on the onside. Short delivery, rocked on to the back foot. Back-to-back boundaries for Kamran Ghulam and Khyber Pakhtunkhwa. He is that kind of a player. Once he is set, he can take the bowling apart. Yeah, you'll get those once in a while. When he sees that he can get underneath it, why not? Clean hit from Adil. That will upset the rhythm of Noman. What a clean hit that one is. That's the one, through the gate, on the off stump. Don't know why he was trying to fire that one in earlier. He gets the man, gets the revenge. A bit of a loose shot that. Again, that gap between pad and bat has opened the gate, and the third wicket falls. What top contest between this right-handed batting and left-arm spin. This time, a typical Numan delivery. The batsman was struck back in his crease just after hitting a 6. He is back in the pavilion. Adil Amin is gone. KP is now in all sorts of trouble. 189 for 3. Zohaib Khan has been the new man in. Has been struggling so far in this tournament. A strong reply by Kamran Ghulam. His third boundary of the innings, came forward and let it go towards the cover position. Had width on it and fuller length as well. Strong use of feet, and there she goes. First 6 for Kamran Ghulam. You see, he got 8 runs already in the over. Down the wicket. कट कर दिया, लेट कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब, 4 रन्स हो जाएंगे. सरतोड़ कोशिश की फील्डर ने, लेकिन इसका मौका नहीं मिल सका. थोड़ा सा वेट दिया था, उसका फायदा उठाया ज़ोएब ने. हल्के से गेंद अंदर भी आया था. Excellent shot there. It was right in the slot for him to drive it in covers. Zohaib looking really good now. He's joining the party with Kamran Hussain. Let the ball come to him. Full flourish of the bat. Straighter ball और down the leg side ये गिरा हुआ बॉल था और विकेट कीपर बॉल पकड़ने से कासिर रहे, तो अंपायर का इशारा ये बाय के रन पढ़ने के बाद गेंद सीधा रहा, लेकिन वो बाउंस हुआ और विकेट कीपर उमैर नहीं पकड़ सके, तो बाय के यहाँ पर 4 रन हासिल हुए. फिर एच निकला है और एक मरतबा फिर विकेट हासिल करने में कामयाब. मुनीर रियाज की इस इनिंग्स की पहली कामयाबी. बिलाखिर उनका सबर
और ये हिकमत अमली रंग ले आई। कामरान गुलाम जो कि इससे पहले बच निकले थे, लेकिन इस मरतबा ये गेंद हाथों में चली गई, नुकसान, और एक मरतबा फिर रमक पड़ी है इस गेम में। ये देखें ऑफ स्टंप पे गिरा बॉल था, हल्का सा बाहर निकला, एजुआ फर्स्ट स्लिप के फील्डर के पास सीधा, और कैच लेने के बाद उन्होंने ऐसे शो किया कि कुछ हुआ ही नहीं जैसे, लेकिन इस तरह चौथा नुकसान उठाना पड़ा। कामरान गुलाम 45 रन बनाने के बाद आउट हुए, 247 पे 4। रेहान आफरीदी और एक और हर खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा की टीम के लिए। अच्छा बॉल और अपील और आउट। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, ऑफ स्टंप के पार गिरा हुआ बॉल था, पड़ने के बाद हल्का सा बाहर निकला, रेहान उसको चेस करने गए, आउटसाइड उजुआ और सीधा उमर मसूद के पास। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है। यही चीज़ होती है कि आप जब चैनल बॉलिंग करते हैं आपको उसी विकेटें मिलना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर प्लेन मिस के बजाय एज हुआ, तो इस तरह एक और विकेट गिर गया है केपीके का। अच्छी लाइन और लेंथ पे चेस किया, देखें इस बॉल को। उसके साथ ही अंपायर्स ने चाय के वक्फे का ऐलान किया है, और ये जो सेशन अदरवाइज बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, अचानक से इन 2 विकेट्स के जरिए से नॉर्थ के फेवर में चला गया है। एक मरतबा फिर 27 ओवर्स फेंके गए, रन्स बनाने की रफ्तार कुछ कम रही, लेकिन इसमें तेजी इब्तिदा में मौजूद थी। So this is how it looks in the session between lunch and tea on the final day. 252 for 5 still going on at a very healthy run rate, but they've just lost 2 wickets, and that is the case that KP would feel. They've left a bit of an initiative slip out. Still in the game though, lots of excitement lined up. The partnerships are important. Up in the order, the openers 155 setting the tone, and then Olam and Zohaib putting on 58. A bit of a hiccup at around T with 2 wickets falling back to back, but lots to play for in the final session. 2 wickets apiece for Munir and Noman, a wicket for Mohammad Nawaz, and they are trying their level best to get the remaining 5 wickets and get those 16 points. Overall, the game controlled by Northern in the first 3 days. Finally, KP waking up and challenging the opposition. 138 is what they need to win this match. In the final session, 5 wickets is what Northern require. Let's see where the final session goes. इनसाइड द लाइन बल्ले को रखा, ऑफ स्टंप के बाहर। काफ़ी गलतियां की थी पहली इनिंग्स में, और स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। 2 फील्डर थे गली पोजीशन पर, लेकिन गेंद उनकी दस्तरस से निकल गई। पहली गेंद को स्वीप कर दिया, बहुत ज़्यादा फाइन खेलने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए खालिद उस्मान। इससे पहले कामरान गुलाम के खिलाफ ये हरबा इस्तेमाल किया था, वो कारगर रहा था, लेकिन खालिद ने पहली गेंद पर अच्छा जवाब दिया, और उल्टा स्वीप कर दिया। इस बार भी बड़ी तेज़ी से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली है। एक और चौका, 2 बाउंड्रीज लगाई, दबाव उन्होंने वापस शिफ्ट कर दिया है नोमान अली पर, जो राउंड का विकेट आए थे। फिर स्वीप शॉट खेलने में कामयाब हुए, मुसलसल तीसरी बाउंड्री। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, और किसी भी मौके पर नहीं लगा जैसे खतरा मोल ले रहे हूँ, इतनी महारत से खेलते हैं। स्वीप शॉट केपी के कप्तान, नॉर्दर्न के कप्तान के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए, और बिल्कुल इस वक्त रुक नहीं रहे हैं, बहुत ही बहादुरी से बैटिंग करते हुए। एक और 4 रन। An expensive drive by Zohaib. Finally, some runs coming in form of a boundary. Now less than 100 required. 99 to win to Khyber Pakhtunkhwa. Another milestone achieved. Oh, he's gone
played away from the body. That's something he didn't want to do. 2 gullies in position, and he's chased one way outside the off stump, and he's paid for it. All the patience could not pay off for the captain. It was way outside. He was going for an expensive drive, but now once again straight to Asif Ali in the gully region. His second catch at almost the similar position. So the wall is broken. Khalid Usman departs. Once again, this game has got the life. 293 for 6, and this is time for the final drinks break here in National Stadium of the round 5. के जहन में कोई शक व शुबा नहीं था। मुसलसल दूसरी कामयाबी वकास अहमद की। वकास अंदर लेकर आए थे, अब देखना होगा कि किधर हिट हुआ ये, और लेग स्टंप पे हिट हुआ है, बिल्कुल नीचे लगा था और एम्पायर का फैसला आउट। तो इस तरह एक और नुकसान, साजिद खान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इस दफा जोर से हिट लगाया, आगे पिच हुआ बॉल था। वसीम ने वकास जो है वो अप्रिशिएट करते हुए कि बड़ी जोर से हिट लगाई, आगे पिच हुआ बॉल था, पैर के सर के ऊपर से ये शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। Has he got him? Has he got him? Yes, he has. The batsman didn't want to look at the umpire because he knew he's edged it. It's gone off this body and straight into Silly Point's hands. So wicket number 3 for Noman, and it's 8 down. So finally tactic working for Noman Ali. Has been bowling since morning, and that's the big fish. Zohaib gone. He was in that defensive stance but couldn't stop the ball bouncing off the fingers, and 42 is what he scored. Oh, that's a good leave into the off stump. Had no idea where it was going. 4 down for Norman, and overall 9 wickets fall. Just a wicket away now, Northern. And the arm ball working for Noman Ali. Imran had no idea, couldn't read it. This was the arm ball. He left it, thought that it would spin, but this was the arm ball coming into him, taking off his off stump. और चौका हासिल कर देंगे क्या वसीम? तमाम फील्डर्स आगे हैं। एक मरतबा फिर सरफराज सब्स्टिट्यूट फील्डर को जाना पड़ेगा इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने जाने दिया इसके बजाय कि मजीद वक्त इस गेंद को वापस फेंकने में सर्फ हो। क्या ये आखिरी गेंद बन जाएगी गेम की, या जीत पे मुतनज होगा? अपील करते हुए, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप को मिस करती है। एक मरतबा फिर नॉट आउट। बहुत अच्छा डिसीजन इमरान जावेद का, बहुत जोरदार अपील हुई थी, लेकिन मिडिल लेग से गेंद अंदर आ रहा था और आई थिंक लेग स्टंप को मिस कर रहा था। बहुत अच्छी एम्पायरिंग इमरान जावेद, देखें लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल। सांसें थामे हुए देख रहे हैं नॉर्थ के खिलाड़ी, और एक गेम खत्म करने का ऐलान किया। आखिरी सबसे बड़ा मौका इस गेम में। नॉर्थ 5 पॉइंट्स पर इक्तफा करना पड़ेगा, जबकि वापस आकर गेम को ड्रॉ करने में कामयाब खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें हर खिलाड़ी का अपना किरदार रहा इस आखिरी इनिंग्स में। कल के दिन फॉलो ऑन को अवॉइड किया और आज अपनी जाम फिशानी के साथ टॉप ऑर्डर, मिडल और अब आखिरी लम्हात तक टेल ने बैटल आउट करते हुए, खास तौर पर वसीम ने, जिन्होंने 59 गेंदों का सामना किया। What a wonderful fight it was from KP. They fought till the last over and the last light available in Karachi and managed to save the day. A draw was almost like a win for them, and they finished up at 319 for 9, faced 97 overs. Partnerships, the 155 opening partnership made them believe they can chase the 390 they were supposed to up till T. Just before T, they lost the 2 wickets, and that's when the shutters went down, and they managed to save it by defending every single ball that came to them. Bowling, well done by them because they managed to get 9 wickets, but so close yet so far. 4 wickets for the captain Norman, 2 wickets apiece for Munir Waqas, looking very good, Munir especially with 7 wickets in the game, and a wicket for Mohammad Nawaz. So the match summary tells us it's been a high-scoring game. Northern 460 for 9, Khyber Pakhtunkhwa fighting back with 318. Northern again putting quick fire 247. Khyber Pakhtunkhwa, again I would repeat myself, did so well.
that this draw is almost like a win for them because they came out of nowhere while Northern was controlling the match for the 3 consecutive days. Well, a good game to watch and hope you enjoyed the highlights. Match drawn, and until next time, it's goodbye.